तामीरात टीवी के साथ मैं हूं आप सबकी मेजबान रूहा फातिमा। कोई भी कौम तरक्की उसी वक्त करती है जब वहां की मर्द और औरतें शाना बशाना होकर चलें। आज मैं आप सबको मिलवाऊंगी डिजाइन कोड की प्रिंसिपल आर्किटेक्ट मिस आयशा। हम जानते हैं उनकी सक्सेसफुल लाइफ जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम आप? अल्लाह का शुक्र। मैम सबसे पहले तो आप अपनी फर्म के बारे में बताएं। My name is Ayesha Bilal and I am principal architect मैम, at आपने कम्प्लीटली Design. एजुकेशन यहाँ पाकिस्तान से हासिल की है या फिर अब्रॉड भी गई थी? I have a bachelor's in architecture from Okay. Indus Valley School of Art, and I hold a diploma in parametric design from EAC in आर्किटेक्चर Barcelona. की फील्ड की ज्वाइन क्यों की? लाइक आपकी फैमिली बैकग्राउंड था या फिर आप ही हैं अपनी फैमिली में फर्स्ट आर्किटेक्ट? Okay, I don't think there are many architects maybe in the extended family. I personally had interests that were not very conventional in the sense that I couldn't really place myself as a pre-med or an engineering or a business student. I liked studying chemistry. I liked to draw, and I liked literature, and I felt that architecture was a field that allows you to bring all these different influences into it. So I was very lucky that it just worked out, and so it was definitely based on interest. अच्छा, तो आपने जैसे बताया आप केमिस्ट्री में आपका बहुत इंटरेस्ट था, तो केमिस्ट्री और आर्किटेक्चर की फील्ड दोनों बहुत डिफरेंस हैं, तो लाइक कैसे आपको पता चला कि आप इसी फील्ड के लिए बनी हैं? So I think one thing that's common is जो ज़रूरत होती है आपको आर्किटेक्चर की फील्ड में is like to have good observation skills, and I feel कि chemistry was also a lot of logic, so which is also a big part of architecture. So all of these things kind of do, I mean your learning is not like only like आपने अगर chemistry ही apply करना है, उस subject की जो basis होती है, sometimes that also allows you to apply that in your professional life. अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने अब्रॉड में भी डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो वहाँ की तालीम में और यहाँ की तालीम में क्या फ़र्क है और आप क्या चाहती हैं, क्या बेहतर होना चाहिए यहाँ पे? While I was studying in Spain, particularly जिस institute पे मैं थी, it's considered a very avant-garde school. मतलब they would experiment with robotics and 3D printing. This was almost 10 years ago. So उनकी theories and उनकी process हमारे theory और process से थोड़ी different है. I feel कि हमारे यहाँ practice and understanding थोड़ी है that all architecture theory needs to be applied and built. For them, a lot of architecture theory is experimental. So not necessarily all of these things will get built, but for the purpose of academia वो exploration हो रही होती है. तो ये थोड़ा सा difference है कि हम बहुत result oriented हैं अभी भी, and teaching in a lot of institutes abroad उसमें process को ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपकी लर्निंग क्या है. आफ्टर योर कंप्लीट एजुकेशन फिर आपने कौन सी पहली फर्म थी जो ज्वाइन की और डेजिग्नेशन क्या थी आपकी? आई वाज अ प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट विथ नाहिद माशूकुल्ला. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब आफ्टर माय अंडरग्रेड. अच्छा, आर्किटेक्चर की फील्ड में लाइक बहुत सी सब फील्ड्स होती हैं, लाइक किसी को इंटीरियर डिज़ाइनर, स्केचिंग, ड्राफ्टिंग ये सब पसंद होता है, तो आप किस में महारत रखती हैं? I think my interest is towards architecture, which is more of the built form. In हमारी practice में we do interiors. We do a lot of commercial interiors, which means offices and salons. But personally, I'm interested in designing architecture, so that I lean more towards the houses and the buildings. अच्छा, आप खुद को टेक्नोलॉजी से कैसे अपडेट रखती हैं, क्योंकि आपको पता है दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपडेट होती जा रही है, तो लाइक कैसे आप खुद को टेक्नोलॉजी से अपडेट रखती हैं? जी बिल्कुल. वेल वी आर ऑल टॉट हाउ टू ड्रॉ, एंड थोड़े बेसिक सॉफ्टवेयर्स तो हमें कॉलेज में ही सिखा देते हैं, देन व्हेन यू आर वर्किंग यू एंड अप यूजिंग दो सॉफ्टवेयर्स, तो उसमें थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी आ जाती है. हाउएवर सिंस आई ग्रेजुएटेड देयर हैव बीन न्यूअर सॉफ्टवेयर्स दैट हैव कम इनटू यूज, SketchUp, Revit.
all of these softwares जिसके लिए courses offer होती हैं, and myself and my staff actively take on those courses, and we are all digitally quite up to date in being able to use all of them. अच्छा, एजुकेशन के बाद जैसे कि हम कोई न्यू फर्म ज्वाइन करते हैं तो हमारा पहला प्रोजेक्ट हमें बहुत इंटरेस्ट होता है उसको करने में, तो आपका ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें आपने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से काम किया हो? So I have two such projects actually. I think the first would be when I was with Nahid, Mashukallah was a restaurant, and it was very exciting. So that I remember very fondly. Uske baad, the first house that I did on my own was my mother's house. And I was just 27, and it was very challenging at that time to see all aspects एक project का. But obviously because it's also my mother's house, it's very close to my heart. अच्छा, किसी भी फील्ड से कोई भी ताल्लुक़ रखता हो तो उसका एक आइडियल होता है, तो आपके आइडियल कौन है? I would have to say it's Nahid, my first boss, Nahid Mashukallah. She was very inspiring. I learned a lot from her. उन्होंने मुझे सिखाया कि डिज़ाइन में सबसे ज़रूरी स्किल ये होती है कि आप ओवर डिज़ाइन ना करें, जो हम सब में थोड़ी सी टेंडेंसी होती है, यू गेट कैरीड अवे, बट शी टॉट मी हाउ टू एक्चुअली डू दैट इन प्रैक्टिस, एंड उसके बेनिफिट्स मेरे हर आई थिंक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हैं. सो आई रियली लुक अप टू हर, एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी. अच्छा, आपसे क्लाइंट डिमांड क्या ज़्यादा करते हैं, लाइक ओवरऑल अगर बात की जाए? सो हमारे क्लाइंटेल एंड प्रोजेक्ट्स में एक कॉमन जो चीज़ है दैट एवरीथिंग इज़ कस्टमाइज्ड. What we don't have like a one solution that fits all. हमारे पास ज़्यादातर जो clients आते भी हैं, they usually want something that is customized to their either their lifestyle or their brand, and we have always taken extra time to do that. I mean, कोई भी चीज़ specifically design करने में थोड़ा सा ज़्यादा time लगता है, but we have been doing that, and I think that's just become our practice now. तालीम दी जा रही है तो आप क्या समझती हैं उसमें और क्या बेहतरी होनी चाहिए? I feel कि practical experience बहुत ज़रूरी है, because especially in I think बहुत सारे misconceptions हैं about हमारे field में actually काम क्या होता है. तो I feel कि आप जब डिग्री हासिल कर रहे होते हैं उसमें जो इंटर्नशिप प्रोग्राम नॉर्मली हर डिग्री में ऑफ़र होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक कि वे यू गो फॉर योर इंटर्नशिप, उस इंटर्नशिप पे आपकी एक्सपोजर क्या रहती है, आई थिंक दैट इज़ वेरी हेल्पफुल आपकी लर्निंग में. बिल्कुल. अच्छा, आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हों जिनके बारे में आप बताना चाहें? जी, वी आर डूइंग वन पर्टिकुलर रेजिडेंस दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. इट हैज़ कंप्लीट डिसेबिलिटी एक्सेस, because one of the clients is differently abled and he is wheelchair bound, but उनका शुरू से requirement ये था कि मुझे मेरा घर ऐसा feel हो that कोई हर एरिया मेरे लिए एक्सेसिबल है. तो हमने उसको उसी तरह से लेकर प्लान किया है. ही कैन गो इनटू द किचन, द बाथरूम्स, ही हैज़ एक्सेसिबिलिटी ऑन ऑल लेवल्स. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सीइंग दैट प्रोजेक्ट. अच्छा, आपकी एक ही ऑर्गेनाइजेशन को आप रन कर रही हैं या फिर और भी हैं? I am not running another organization, but we do take a lot of design and build projects, which I work in partnership with Praxis Construction. And what we do is that we give people the option that you can either come and just have design consultancy done through me, or we work as a team and we do a design and build solution in which I will be doing the design for you, and then the execution is carried forward by my partner and his आपने कितने team. प्रोजेक्ट्स अब तक कर चुकी हैं? I don't have an exact count, but we've done a lot of houses, we've done commercial buildings, we've done factory cafeterias, we've done offices, and actually a lot of salons. I've been practicing for 13 years. Okay. And in that time, Allah ka shukr, we've had a big volume of work. अच्छा, देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हॉरिजेंटली बिल्डिंग्स होनी चाहिए, लाइक किस तरह से घर की लोकेशन होनी चाहिए, हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल?
आई थिंक इसका आंसर इतना सिंपल एक्चुअली हो नहीं सकता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट टू सिंप्लीफाई इट अ लिटिल बिट इज़ आई फील कि हमें अपना कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़रूरी हो गया है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा इज़ हैपनिंग. सो बिल्डिंग या हाई राइज डेवलपमेंट या अगर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करनी है तो उसकी सराउंडिंग एरियाज़, उसकी जियोग्राफी देखना बहुत ज़रूरी है. एंड ऑल्सो आई फील एक्सपेंशन ओवर टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी पॉपुलेशन जिस तरह से ग्रो हुई है इन द पास्ट 20 years, I feel before any project is developed, it is important to make those estimations and calculations that what will be the impact of building something maybe 20-30 years from now. I mean, this is not a product. Architecture is something that is going to be standing for 20-30 years, so really should be planned as such. अच्छा, आपकी फर्म क्या प्रोवाइड कर रही है जो दूसरी फर्म्स नहीं प्रोवाइड कर रही? I think what makes us stand out is that we focus a lot on service, if that makes any sense. So we focus a lot on every client's individual needs. There's no one solution fits all. So I feel that the difference is that we spend a lot of time on every project because we end up customizing solutions to each client's particular requirements. अच्छा, कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि आप लोग फॉलो करते हों और आप बाकी लोगों को भी यही मशवरा दें कि वो इन रूल्स पे चलें? So we do something जो दूसरे आर्किटेक्चर फर्म्स से शायद इतना डिफरेंट नहीं है. आई थिंक मोस्ट आर्किटेक्ट्स डू प्रैक्टिस दिस, बट आई फील कि अगर आप घर बनाने का इरादा कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट आप बनाने का इरादा कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू हैव द राइट प्रोफेशनल्स एज लुकिंग इनटू इट. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी टीम में भी आई एम एन आर्किटेक्ट, वी हैव इंटीरियर डिज़ाइनर्स एंड स्ट्रक्चर engineers who also become part of the team for every project. So it's very important. It might make the project cost a little more, but it's important to get the right feedback from an electrical engineer and a plumbing engineer, because at the end of the day that's how buildings will function. Their electrical and plumbing needs to work with the structure and the aesthetics. So I feel कि बहुत ज़्यादा emphasis aesthetics पे होती है, but उसकी जो actual working है हर project की, it's very important that those things work well, वरना वो aesthetics is not the only thing. अच्छा, किसी भी शख्सियत को निखारने में उनके वालिदैन का सबसे ज़्यादा हाथ हो, तो आप क्या कहना चाहेंगी अपने पेरेंट्स को? उन्हें क्या कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात हमारे चैनल के थ्रू? So my mother and her family have always been very supportive and very invested in my education and in my independence, and they have always encouraged me, and I think ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है for any individual के घर से support मिले. My nana passed away in 2019, but मेरे graduation के बाद he was very proud of me, and that was always very nice to know. अभी भी मुझे यही याद रहता है that he was so proud of me. And मेरी graduation के दिन my mother and my mamu were present for the graduation ceremony, and you know, it's nice to have family always by your side. अच्छा, आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? I think this is a great initiative. I love that architecture reporting is coming into the digital media, digital platform. Yes. I think it will make it a lot more accessible for a lot of people, because watching videos has become the norm rather than reading and picking up print media. So इस तरह से I wish you all a lot of success, and I hope you are able to reach a very wide audience. Thank you. जी, तो आपने सुना मिस आयशा की लाइफ सक्सेस जर्नी के बारे में, और मेरे ख्याल से यकीनन आप लोग मोटिवेट हुए होंगे. तो इसी के साथ मैं रूहा फातिमा तामिरात टीवी से आप सबको अलविदा कहती हूँ. फिर आऊँगी एक नई वीडियो, एक नई मोटिवेशन के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.